చెప్తున్నా మా స్పెషల్ సిరీస్ బియాండ్ ఏఐ సివిస్ అండ్ జేడీస్ విత్ లింక్డ్ఇన్ కి స్వాగతం. ప్రస్తుతం టెక్నాలజీ హైరింగ్ విధానాలను ఎలా మార్చేస్తోంది, అలాగే రిక్రూటర్ల దృష్టిలో ప్రొఫెషనల్స్ ప్రత్యేకంగా నిలవడానికి ఏం అవసరం అవుతాయో అనే విషయాలను ఈ సిరీస్ లో విశ్లేషిస్తున్నాం. ఈ ఎపిసోడ్ లో ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో రిక్రూటర్లు హైరింగ్ ను ఎలా నిర్వహిస్తున్నారు, సంస్థ ఎదుగుదలకు దోహదపడేందుకు భవిష్యత్ టీమ్స్ ను ఎలా రూపొందిస్తున్నారు అనే విషయాలను ఇద్దరు సీనియర్ ఇండస్ట్రీ నిపుణులు వివరించనున్నారు. మరిన్ని వివరాల కోసం జీ మీడియాకి చెందిన గీతాంజలి మాథుర్ ను కలిసి తెలుసుకుందాం. तो आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है जिनसे हम जानेंगे कि हाउ आर ऑर्गेनाइजेशंस अडैप्टिंग टू दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ वर्क और साथ ही ये शिफ्ट प्रोफेशनल्स, बिजनेसेस और रिक्रूटर्स के लिए क्या मायने रखता है. तो आइए स्वागत करते हैं हमारे मेहमानों का. सो वी हैव विद अस रुचि आनंद, हेड लिंक्डइन टैलेंट सॉल्यूशंस इंडिया, एंड संजीव जैन, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर विप्रो. And let me tell you, this year holds a special significance for Wipro as it celebrates 25 years of being listed on the New York Stock Exchange and 80 years since its founding. आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू गीतांजलि. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद योर क्विक थॉट्स. एक गेम है, छोटा सा एक वार्म अप गेम है. यहाँ कुछ सवाल लिखे हैं. I'll rip the strip, you read out the question और आप दोनों उस सवाल का जवाब देंगे. So here's the first question. One AI-driven shift at work we don't talk about enough. Yeah, in my view, what we don't talk about enough is AI has truly democratized talent, learning and opportunities. आज के दिन में there is a level playing field where everyone has access to knowledge and information which actually drives innovation and inclusion at scale. Absolutely. What a great answer. I'll add to that. AI has actually made us more intentional. It has helped us to really rethink how we operate, how can we get better. And I think that's a big shift in terms of how we embrace change on a path to just getting better and more productive. One area beyond hiring where AI is transforming work. So I think internal mobility, जिसका मतलब ये है कि it's not just about how companies are hiring talent from outside, but how we talk about not just buying talent, but building talent. It's all about learning new skills and moving into different roles. So there is a huge focus on internal mobility within the organization. One area which I like is the employee experience. आज के दिन अगर एम्प्लॉय ऑफिस में आते हैं तो ए डे इन लाइफ ऑफ एम्प्लॉय दे टच एआई एवरीवेयर. Okay, one skill professionals underestimate in an AI first workplace. Adaptability with critical thinking and reasoning for using AI responsibly. It's very important to ask the right questions so we avoid the bias. Absolutely, I'll agree with him. Yeah, I'll just say that learnability as a skill. You know, how do we constantly keep learning? How do we stay curious? I think, having humility to know that I don't know enough and how can I keep learning? So I think these skills are kind of sometimes underestimated, but they're very powerful. So one mindset shift, companies need to unlock AI's value. Absolutely. So I think जब हम mindset shift की बात करें, of course, first thing that comes to our mind is when we're using AI tools like Copilot, ChatGPT is to save time. But I think if we move from automation to amplification, जिसका मतलब ये है कि not just to save time, but I actually create agents, look at more functionality which is not just reactive but proactive help in my workflow. So कंपनीज अगर उस हिसाब से और देख भी रही हैं, I mean, in fact, of course, I'm sure there are great examples with what Wipro is also doing, where it is amplifying the automation that's already being done. Yeah, in my view, the mindset shift is AI is seen today as a software or as a tool. It should be looked out as a buddy, as your assistant. ताकि आपके जो repetitive काम हैं वो AI assistant करेगा and you can focus on your creativity, curiosity, collaboration so that you can actually do a higher value added and a higher purposeful work. So now the final question. All right, one word to describe the future of work and why. Yeah, in my view, it is adaptive. It's adaptive because I'll have to, in future, you'll have human and AI. You'll interact with AI. So you'll need to actually have the right reasoning, the right thinking, so that you can let your buddy do the
repetitive tasks, and you can focus on meeting your aspirations. Absolutely. I think he's answered it. He's answered all very well. But I'll just add one more word now. I would say connected. Because you will see that the more we are using a lot of these tools and it becomes a part of a flow of our work, we actually need to look at more integration, stay connected, and all the human skills or the power skills that we're talking about will actually mean that as humans, we will have more time to focus on connection. An interesting choice of word, Ruchi. Connected. इस बारे में मैं और जानकारी लूंगी आपसे as we move ahead. लेकिन right now let's zoom out a bit. आजकल AI सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, एक डे टू डे रियलिटी बन चुका है, irrespective of the industry you belong to. तो रुचि, from your vantage point across industries and workforce behavior, मैं ये जानना चाहूंगी कि AI टैलेंट एक्विजिशन को किस तरह से बदल रहा है, साथ ही स्किल डिमांड कैसे बदल रही है, और रिक्रूटर्स के स्ट्रेटेजिक रोल को AI कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहा है. Gitanjali, पहले तो मैं कहूंगी that of course, like you said, it's not just a buzzword anymore. पहले तो from a India standpoint, I think we are in a sweet spot as a country. Firstly, हम सब बात करते हैं हमारे demographic dividend की. This is like the best time where we are already seeing our talent across India has the highest AI skill penetration if we compare it to the world, as well as Indian talent actually spend a lot more time learning. And then when we come to talent acquisition, I agree with you. It's moving from, I would say, from hype to handbook, because it's already being implemented across all functions across the organization that we see. And when we talk about, आपने पूछा skills के बारे में, it's over and above the technical skills, but human skills like problem solving, creativity, all these strategic thinking, these are becoming more and more critical. And the third part, which I think you asked more around the role of talent acquisition in terms of business partners, another research is actually showing us that if we look at how today the way recruiters are becoming a more and more business critical function, which they always were, but earlier hota ye tha ki it was all about measurement metric was cost per hire. The focus on quality per hire is actually moving more towards revenue per employee. So from cost per hire to revenue per employee, which is a business productivity metric. That is something which is becoming very important for organizations, and I'm sure you'll add more on that when we hear an organization's perspective. So that directly makes talent acquisition a very strategic partner to the business. So we're seeing this evolution over the years. It was always there, but it's amplified now. ओके, तो संजीव जी, अब मैं आपके पास आना चाहूंगी कि विप्रो हैज बीन वेरी वोकल अबाउट इन्फ्यूजिंग एआई अक्रॉस इंटरनल सिस्टम्स एंड क्लाइंट सॉल्यूशंस. तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस इंटीग्रेशन से आपके ऑर्गेनाइजेशनल एजिलिटी, साथ ही डिसीजन मेकिंग और जो कैपेबिलिटीज आप प्रायोरिटाइज करते हैं, उनमें आपको क्या फायदा मिलता नजर आ रहा है? या सी, हमने विप्रो में वी टुक ऑन दिस जर्नी ऑफ एआई कपल ऑफ इयर्स बैक. हमारा एक विप्रो हैज ए यूनिफाइड AI powered platform. So under Wipro Intelligence हम उसको 3 तरह से AI को इन्फ्यूज करते हैं. एक हो गया ऑपरेट बेटर, यानी कि अपनी कंपनी के लिए हम क्या कर रहे हैं. एक हो गया डिलीवर बेटर, यानी कि अपने क्लाइंट्स को बेटर सर्विस कैसे दे पाएंगे. एक हो गया चेंज द गेम, जैसे हाउ कैन आई ऑफर न्यू ऑफरिंग्स टू द क्लाइंट्स सो दैट इट्स अ न्यू सर्विस लाइन फॉर देम. सो लेट मी गिव यू कपल ऑफ एग्जांपल्स. रुचि ने अभी बात कही कनेक्टेडनेस की. हमारे पास 2,30,000 लोग हैं, 60 कंट्रीज में काम करते हैं, 100+ नेशनैलिटीज हैं. सो हाउ डू वी कनेक्ट ऑल ऑफ दैम? सो वन इज हमारा एक इंटरनल प्लेटफॉर्म है जिसको हम वी नाउ बोलते हैं. थिंक ऑफ इट लाइक एन असिस्टेंट टू एवरीवन. तो हमारे एम्प्लॉय को कोई भी क्वेरी हो, वो हमारा एआई असिस्टेंट सॉल्व कर देता है. एक वीक में कम से कम हमारे पास 100,000 क्वेरीज आती है. तो एआई इज एक्चुअली हेल्पिंग अस देयर. वाओ, मतलब कितना आसान कर दिया एआई ने आज की डेट में ये सब कुछ. तो ये रियल वर्ल्ड एग्जांपल जो है, इन्हें देखकर साफ हो गया है कि एआई रेडी वर्कफोर्स आज ऑर्गेनाइजेशंस की टॉप प्रायोरिटी है. Absolutely. राइट. तो रुचि, अब थोड़ा सा वापस चलते हैं. आपने कनेक्टेड वर्ड इस्तेमाल किया था, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि फ्यूचर ऑफ हायरिंग को डिस्क्राइब करते समय ये कनेक्टेड वर्ड का इस्तेमाल कैसे आपने किया, इसका क्या मतलब था, और एआई इस शिफ्ट को कैसे इनेबल कर रहा है? Connected मेरा मतलब ये है कि within an organization also all functions and roles they actually work together. So for example, talent acquisition, when they are hiring, they are hiring people, let's say even if they have 80% of the skills, because a lot of the other skills that are required
for that function or the role, L&D is taking over to help in upskilling them, right? And of course also helping them to pivot into different roles over a period of time, and that leads to retention, because all functions, all roles within the organization as well as externally, you will be more connected rather than saying that you fend for yourself. जैसे इन्होंने कहा कनेक्टेड, वैसे हम देख रहे हैं कि एआई आज हर टीम में है, हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं संजीव जी आपसे जानना चाहती हूँ कि आप अपने हायरिंग प्रायोरिटीज और अर्ली स्क्रीनिंग प्रोसेस जो है उसे कैसे बदल रहे हैं? या देखिए, सबसे पहले हम जो कर रहे हैं, हमारी प्रायोरिटी है इंटरनल फर्स्ट, विच एक्चुअली टॉक्स टू इंटरनल मोबिलिटी, विच इज उसके बाद जब हम हायरिंग करते हैं तो बेसिक स्टार्टिंग फ्रॉम राइटिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, और जॉब डिस्क्रिप्शन इज नॉट बेस्ड ऑन टाइटल, बेस्ड ऑन स्किल्स, which is where I think we are able to use AI to get the skills. उसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ प्रोफाइल्स जो आती हैं, उसके बाद जब कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है, हम उसमें कैंडिडेट का इंटरव्यू भी आजकल फर्स्ट इंटरव्यू AI करता है। हम लोग हायर करते हैं कम से कम 4-5 हज़ार लोग हर क्वार्टर, और हम अगर 100 इंटरव्यू करेंगे तो एक हायर होगा। तो हमको ये अपना एफर्ट बचाने के लिए AI इज द फर्स्ट लेवल ऑफ इंटरव्यू, और जब AI इंटरव्यू करता है तो आपका बायस चला जाता है, एंड एक्चुअली यू गेट मोर ऑब्जेक्टिव फीडबैक टू द कैंडिडेट। सो इससे हमें क्या हो रहा है कि रिक्रूटर का टाइम ज़्यादा जा रहा है कैंडिडेट एक्सपीरियंस में, अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में और रिलेशनशिप बढ़ाने से कैंडिडेट के साथ। तो उससे हमारे एक्सेप्टेंस रेशियो बढ़ रहे हैं, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और कैंडिडेट जो ज्वाइन कर रहे हैं वो ज़्यादा स्टे कर रहे हैं, बिकॉज नाउ दे अंडरस्टैंड द स्किल्स मच बेटर। राइट, तो टाइम बच रहा है और स्किल्स सही पहचानी जा रही है। बिल्कुल राइट। तो थैंक यू सो मच रुचि एंड संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और एआई से जुड़ी इतनी जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। अगले एपिसोड में आपसे बात करेंगे और जानेंगे कि जो प्रोफेशनल्स हैं उन्हें एआई की एज एंड डेट में अपने आप को अपडेट रखने के लिए क्या करना जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you.